As India rapidly advances in improving connectivity as the backbone of economic growth, the next focus for NHAI is Ambala, a key gateway in North India. The authority shares that 40.75 km long Ambala Ring Road project has been developed as a major solution to ease traffic and improve regional connectivity. The modern 6-lane greenfield highway is being constructed under Bharatmala Pariyojana. The project is being developed in 2 sections. The first section spans approximately 18 kilometers from Sadopur to Kapuri village and is being built as a high-speed access-controlled corridor forming part of Shamli-Ambala National Highway NH 344 GM. The second section covers 22.524 kilometers from Kapuri village to Bhari village and will function as the Ambala Ring Road. Once completed, the project will connect major highways including Ambala Chandigarh, Ambala Kala Amb, Ambala Shah, Ambala Jalandhar and Ambala Kaithal, enabling smooth bypass movement around Ambala city and cantonment areas. This will significantly reduce travel time, save fuel and ease traffic congestion within the city. The project is being built using modern engineering standards to ensure safety, strength and high-speed mobility. Key infrastructure elements include 1 major bridge, 2 railway overbridges and 1 flyover to ensure uninterrupted traffic flow. Additionally, 4 minor bridges will improve local connectivity and water drainage. For public convenience and safety, 19 underpasses are being constructed to allow safe road crossings. A total of 66 culverts are also being built to maintain structural stability and ensure proper water flow. The project further includes a modern toll plaza to ensure efficient and streamlined traffic management. Project Director NHAI PIU Ambala Prashant Kumar Sinha says the Ambala Ring Road project will be completed by October 2026. ये परियोजना मेनली 2 पार्ट में विकसित हो रहा है। पहला भाग जो है हमारा 18 किलोमीटर का है, जो कि सादोपुर से शुरू होता है ग्रीनफील्ड और कपूरी गांव तक जाता है। दूसरा पार्ट जो है 22.5 किलोमीटर का है, जो कि कपूरी गांव से शुरू होता है और जाकर बलाना में ख़त्म होता है। जो ये रिंग रोड परियोजना का मेन उद्देश्य जो था, हमारा पूरा अम्बाला सिटी का जो कंजेशन है उसको दूर करने के लिए हमें बनाया गया है। और इस परियोजना को जब पूरा हो जाएगा तो पूरे अम्बाला सिटी का जितने भी हमारा कंजेशन पॉइंट है वो दूर हो जाएगा। ये परियोजना जो हमें अलग अलग नेशनल हाईवे से क्रॉस करता जाता है। ये अम्बाला चंडीगढ़ NH 44 जो पानीपत जलंधर हाईवे, हमारा अम्बाला साहा, अम्बाला काला आम, ये सबको क्रॉस करता है। इस सबके ट्रैफिक को डीकंजेशन करेगा। सिटी के बाहर होते हुए एक रिंग रोड की तरह यूज कर सकते हैं। जो लोकल हमारे यूजर हैं, रोड यूजर्स हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इस परियोजना। इसका हमने जो लक्ष्य रख रखा है अभी आज समाप्ति का, वो अक्टूबर 2026 का है। हमें पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर 2026 तक ये परियोजना पूर्ण कर लिया जाएगा। Overall, the Ambala Ring Road stands as a major step towards strengthening India's infrastructure framework, especially in Haryana and Punjab, and supporting long-term regional development.